A very good morning to all of you. Let us start a CA Intermediate May 24 revision series. We are going to start with the direct tax, the first ever and the very important topic, which is a very basic topic: tax rates, surcharge, and basic exemption limit. Firstly, we are going to start with the basic discussions. We will do the oral discussions regarding that. Let us discuss about the tax slab rates. As all of you are aware that tax slab rates are bifurcated in the two regimes: old tax regimes as well as a new tax regime, which is a default tax regime under section 115 BSC. And old tax regime have the three parts. The first part is a people of aged up to 60 years. Next is from 60 to 80 years, that is senior citizen. And third is 80 years and more, that is very senior citizen. Correct? So for the tax rates of the individual, we will discuss total 4 tax slabs under old tax regime 3 and under default tax regime 1. Total 4 tax rates we are going to 4 tax regimes we are going to discuss. The first ever under the old tax regime, people aged up to 60 years. For them, we will bifurcate our income of the individual RSSC from 0 to 2,50,000, 2,50,000, 1 to 5 lakh rupees, 5 lakh 1 rupee to 10 lakh rupees, and over and above 10 lakh rupees. Individual having total income of 0 to 2,50,000, that is differencing total amount of 2,50,000, don't have to pay tax or nil tax. That is your basic exemption limit. Individual having in total income 2,50,000 to 5 lakhs, the difference amount 2,50,000, individual have to pay tax at a 5%, that is 12,500. The next slab is 5 lakhs to 10 lakhs, differencing amount 5 lakh rupees, tax rate 20%, total tax 1 lakh rupees. Correct? And over and above 30% you have to pay on the differencing amount. On the differencing amount. What is the differencing amount? Differencing amount, suppose your total income is 11 lakh. So on 1 lakh, which is over and above 10 lakhs, you have to pay 30% tax, which is 30,000 rupees. If your total income is 10 lakh 50,000, you have to pay 30% tax on 50,000. Correct? So this is the differencing amount. Let's talk about another part. People, just a second. Yes. People aged 60 years, more than 60 years, but less than 80 years. Tax rate will be the same in a same slab rates, correct? But there is a basic difference in the basic exemption limit. What is the basic exemption limit? 0 to 3 lakhs, that is total income of 3 lakhs. An individual has to pay tax, which is nil, or you can say basic exemption limit. Next slab is from 3 lakh 1 rupee to 5 lakhs, which is 2 lakh. Individual has to pay tax at the same, which is you learned earlier, 5%. And the next slab rate is rupees 5 lakhs 1 to rupees 10 lakhs. On that differencing amount of 5 lakhs,
एन assessee हैव टू पे टैक्स, assessee को पे टैक्स करना पड़ेगा 5 लाख रुपए पे at the rate of 20%, same 12,500 and rupees 1 lakh, not the 12,500. On the 2 lakh rupees, you have to pay it a 5%, which is 10,000. So an individual having total income up to 10 lakh rupees, aged greater than 60 but less than 80, have to pay 1 lakh 10,000 rupees as a tax. But if income is more than 10 lakhs, then फिर से डिफरेंसिंग अमाउंट पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा. सो इफ आपकी एज अप टू 60 ईयर्स है तो आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 lakhs. ग्रेटर देन 60 ईयर्स बट मोर देन 80 ईयर्स, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी 3 lakhs. जस्ट अ सेकेंड. Let's let us resume our class. If your age is more than 80 years, then जैसे हमने देखा था उसे हम करेंगे वेरी सीनियर सिटीजन. वेरी सीनियर सिटीजन के लिए भी टैक्स स्लैब रेट्स बनाए गए हैं, विच इज एज फॉलोस. वेरी सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब रेट पीपल ओवर एंड अबव 80 ईयर्स, जिनके लिए गवर्नमेंट ने बेसिक एग्जामिशन लिमिट बनाई है 5 लाख रुपीस, then that individual has to pay tax on the second slab, that is 5 lakh rupees. 5 lakh 1 जो हम सभी में फॉलो कर रहे हैं, 5 lakh 1 to 10 lakh rupees at कौन सा 5 10 नहीं 20. यस, इनको 5% एप्लीकेबल ही नहीं होगा बच्चा, डायरेक्टली 20% पे करना. एंड ओवर एंड अबव 10 lakhs they have to pay at 30%. So what is summary? अप टू 60 ईयर्स वालों के लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2,50,000. फ्रॉम 60 to 80, बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 lakh rupees. Greater than or equal to 80 years, 5 lakh rupees, which is the basic exemption limit. ठीक है, ये आपका एक ओवरव्यू हो गया तीनों एज ग्रुप्स के लिए अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम और वेरी टैक्स रेट डिस्कशन. करेक्ट. इसके साथ साथ हम 115 बीएससी भी डिस्कस कर लेते, फिर वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर रिवीजन नोट्स. राइट. So let us talk about our default tax regime, okay, which is tax slab rates introduced under the scheme of named as 115 BSC. 115 BSC क्या है बच्चा? इसके अंदर हमारी न्यू टैक्स रिजिम है जिसमें आपको कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू 0 to 3 lakhs, 3 lakhs to 6 lakhs, 6 lakhs to 9 lakhs, 9 lakhs to 12 lakhs, 12 lakhs to 15 lakhs, and over and above 15 lakhs. So this is the tax slab under the section 115 BSC. Now 115 BSC में आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट बनती है अप टू 3 लाख रुपीज. 0 to 3 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको बेसिक एग्जामिशन लिमिट है. दैट मीन्स यू हैव टू नो टैक्स
पेमेंट. ये आपकी टोटल इनकम फॉल कर दी 3 lakhs to 6 lakh, you have to pay tax at a 5% rate, which is the differencing amount 3 lakh rupees. सिर्फ 5% ऐड करना है और इनकम में 3 लाख रुपीज ऐड करना है. करेक्ट. 6 लाख टू 9 लाख सिमिलरली 3 लाख का डिफरेंस है. इस पर आपको पे करना है 10% कंटिन्यूइंगली बाई 15%. 12 से 15 पे आपको पे करना है 20% और 15 लाख पे आपको पे करना ओवर एंड अबव आपको पे करना है 30%. डिफरेंसिंग अमाउंट देखेंगे तो बच्चा सभी में आपको दिखेगी 3 लाख रुपए की. और ओवर एंड अबव 15 लाख में तो आपकी जो भी वट एवर इज योर इनकम, ये आपका डिफरेंसिंग अमाउंट पे 30% से आपको टैक्स पे करना है. करेक्ट. सो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन हो चुका है फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम. एजेड लेस देन 60 ईयर्स, 60 to 80, मोर देन 80, 115 BSc जो सबको कॉमनली एप्लीकेबल है. लेट अस डिस्कस द सेम फ्रॉम द रिविजन नोट्स. I hope the screen is clearly visible to all. Yes. On your screen, you can find entire discussion which we made till now. Tax rates, applicability, normal provisions, which is old tax regime. Slabs दिए हुए, basic tax दिया हुआ है. Up to 2,50,000 nil, 2,50,000 1 rupee to 5 lakh 5%, that is on differencing amount of 2,50,000. 5 lakh 1 से लेके 10 लाख तक 20%, which is on differencing amount of 5 lakh rupees. Next is over and above 10 lakh, which we discussed previously. टैक्स रेट है आपका 30%, जो डिफरेंसिंग अमाउंट होगी आपकी मोर देन 10 लाख, उस पर आपको 30% से टैक्स पे करना है. नेक्स्ट स्लैब्स है आपके फॉर द पीपल मोर देन और इक्वल टू एज ऑफ 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स वालों के लिए. मोर देन 80 ईयर्स के लिए इक्वल्स टू और मोर देन 80 ईयर्स के लिए आपकी अलग से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और टैक्स रेट्स सेम टू सेम है, बट एग्जम्पशन लिमिट वहाँ पे चेंज हो जाती है. 60 ईयर्स अप टू फ्रॉम 60 to 80 के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी बन जाती है 3 लाख रुपए की बच्चों. 3 लाख से लेके 5 लाख 5% यू हैव टू पे ऑन द 2 लाख रुपीज. फ्रॉम 5 lakhs 1 to 10 lakhs people from age group of 60 to 80 pay tax at 20%, that is difference in amount of rupees 5 lakh. ओवर एंड अबव आपको पे करना पड़ेगा बच्चा सिमिलरली 30%, जो 10 लाख से ज़्यादा की आपकी डिफरेंसिंग अमाउंट है उस पर आपको 30% पे करना है. लेट्स टॉक अबाउट जो हमने अभी अभी पढ़ा, पीपल एजेड मोर देन 80 ईयर्स. 80 ईयर्स से ज़्यादा वालों के लिए 3 लाख रुपए तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कवर हो ही रहे, बट फ्रॉम 5 लाख 3 लाख टू 5 लाख भी आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में क्लेम हो रहा है. दैट मीन्स यू हैव टू पे जीरो टैक्स ऑन द if you are senior very senior citizen and your income is up to the 5 lakh rupees. From 5 lakh 1 to 10 lakh similarly 20% on the difference in amount of 5 lakh rupees, no change. Next is over and above 10 lakhs, that is 30%, जो भी आपका differencing amount है उस पर आपको 30% से टैक्स पे करना है, which is very similar and quite similar on the all the tax regimes. देखो ओल्ड में 5 लाख तक 20%, ओल्ड में 60 to 80 में 5 लाख तक 20%, 80 वालों में भी 20%. ओवर एंड अबाउट 10 lakhs, ओवर एंड अबाउट 10 lakhs, ओवर एंड अबाउट 10 lakhs 30%, 30%, 30%, क्वाइट सिमिलर. ठीक है, इतना ही है, सिर्फ ऊपर की दो एंट्रीज आपकी चेंज हो रही है. 150 को डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ. 115 जो भी अभी हमने ओरली देखा सिमिलर है. यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू डू जस्ट आप लोगों को चेंज करनी है स्लैब्स फ्रॉम 3 लाख रुपीज और 5% से आपको टैक्स रेट बढ़ाते जाना है. उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इसमें. अप टू 3 lakhs नील अंडर 115 BSc. 3 लाख से लेके 6 लाख तक इफ योर इनकम फॉल्स in the category of 3 lakhs to 6 lakhs, you have to pay tax at a 5%. From 6 lakh 1 rupee to 9 lakh, you have to pay tax at 10%. From 9 lakh 1
to 12 lakh. If your income falls from this category, you have to pay tax at 15%. You can see just tax rate is increasing at 5% at each step, and income is increasing at 3 lakhs. Correct. Next is 12 lakhs to 15 lakhs. आपको पे करना है 20% over and above 30%, which is on the differencing amount. So यहाँ तक आपका फिर से हमारा सेकेंड टाइम रिवीजन हो गया. नॉर्मल ओल्ड रिजिम अंडर 115 BSc भी हमारा डिस्कस हो चुका है फॉर ऑल द 4 कैटेगरीज. करेक्ट. यहाँ पे बात आती है रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, विच विल डिस्कस right now because it is applicable only to the individual. See यहाँ पे दो conditions रखी है. दो conditions क्या दी हुई है दोस्तों? First condition, rebate under section 87 is applicable if person is, condition A, individual, and condition B, resident of India, and total income is rupees less than or equal to 5 lakh. Then the rebate will be basic tax or 12,500. 12,500 or the basic tax will be a rebate under section 87A if you fulfill both the condition. The first condition is you are an individual, and the second condition is you are resident Indian having total income less than 5 lakh rupees or up to the 5 lakh rupees. Then you will get a rebate under rebate under section 87A. Correct. This much clear. Now, what will be the rebate amount? See, if your tax is 10,000, your rebate will be 10,000. Maximum upper limit for the rebate under 87A is 12,500. So the condition is 12,500 or your tax, whichever is the lower. If your tax is 10,000, the rebate will be 10,000. Your tax, sorry, if your tax is 15,000, then your rebate will be not the 15,000, that will be the 12,500. On the balancing amount, you have to pay the tax. Correct. Balance amount will be the tax payable. Correct. There is a one important point. Certain exemptions are not available if you opt for 115 BSc. If you opt for 115 BSc, then these deductions will not be allowed. Deduction under chapter 6 से deduction under chapter 6 से पूरा की पूरा डिसअलाउड नहीं होगा. उसमें सबको कुछ deductions मिल जाएंगे, just like other than section 80CCD, 80CCH2 और सेक्शन 80JJA. मतलब कि इन 3 सेक्शंस के अलावा आपके जो भी डिडक्शंस होंगे वो सारे आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे इफ यू आर फॉलोइंग 115 BSc. This exemption won't be allowed. Leave travel concession will be not there, and interest on housing loan and safe occupied property. So these exemptions will not be allowed to you if you are following 115 BSc, which is default tax regime to pay a tax. Correct. Let's move forward. Let us discuss tax for Indian company and foreign company. Indian company, which you can say domestic company. कंपनीज को फ्लैट टैक्स रेट लगता है. फॉर इंडियन कंपनी फ्लैट टैक्स रेट इज 30%. फॉर फॉरेन कंपनी फ्लैट टैक्स रेट इज 40%. But if you are an Indian company, which is a domestic company, then you have to see the another thing which is written over here. Only Indian company having gross turnover or receipt for 2021-22 का आपको देखना है लेस देन 400 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़ आपकी अगर इनकम है, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर, देन आपको टैक्स पे करना है 25% इंस्टेड ऑफ 30%. इफ यू आर इंडियन कंपनी यू हैव टू पे टैक्स एट अ फ्लैट 30%. इफ यू आर अ फॉरेन कंपनी यू हैव टू पे टैक्स रेट एट अ फ्लैट रेट 40%. But if you are a domestic company, which is an Indian company, having gross receipt or gross turnover in a previous year, financial year 21-22, less than or equal to 40 crores, then you have to pay tax at a 25%, not at a 30%. This much is clear, correct? Let's move forward to the second part, or you can say the थोड़े बहुत tax rates बचे. One is tax rate for LLP, firm, local authority, firm means partnership firm.
tax rate will be 30%, which is also flat tax rate. These are flat tax rate for Indian company, foreign company, and the partnership firm. You have to pay tax at a flat tax rate. Before discussing the surcharge, let us discuss tax slab rate for cooperative society. For cooperative societies तीन ही है, ज़्यादा नहीं है, और इनकम का पोर्शन भी बहुत कम है. Income is up to 10,000, pay tax at 10%. From 10,001 to 20,000, 20% टैक्स भर दो, और ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा आपकी इनकम है तो 30% से भर दो. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बच्चा इनकम नहीं होती है. मैक्सिमम इनकम होती है उन लोगों की सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस या फिर कोई पेनल्टी या फिर कुछ इवेंट किए तो उससे मेंबर से फीस ली है, वो 10,000 तक है 10%, 10,000 से 20,000 है 20%, 20,000 से ज़्यादा है तो 30%. दीज आर द टैक्स रेट फॉर दी cooperative society. Correct. With this, we are going to move towards second part of the chapter, which is the slab rates. This is we discussed earlier. This is what we discussed earlier. So यहाँ से इसको हम डिस्कार्ड करते हैं. Let us discuss tax slab rates is surcharge for individuals, HUF, AOP, BUI and AJP. See यहाँ पे individuals के बाजू में मैंने all लिखा है. हमने ओल्ड टैक्स रिजिम में देखा था, एज डिफरेंस था अप टू 60, 60 to 80 एंड 80 और मोर. बट सरचार्ज सभी के लिए सेम होगा. इफ योर इनकम फॉलिंग फ्रॉम 50 lakhs but less than and equal to 1 crore, 10% will be the surcharge. 1 crore but less than 2 crore, less than or equal to 2 crore, 15%. More than 2 crores but less than or equal to 5 crores, the surcharge rate will be 25%. And if total income is greater than 5 crores, you have to pay tax surcharge at 30%. And might be you all aware that surcharge is tax on tax. That means suppose your basic tax, if your income is 5 crores under old regime, 5 crores पे आपको 30% भरना है. करेक्ट. हम स्टेप्स में लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं ऐसे डिस्कशन. 5 करोड़ पे 30% भरना है. ठीक है. वो जो टैक्स की अमाउंट आपकी आएगी ना, उस पे आपको 37% सरचार्ज पे करना है टैक्स के ऊपर. और जो टैक्स आएगा आफ्टर एडिंग 37%, आपको 4% HNDC भी पे करना पड़ेगा उसके ऊपर. करेक्ट. सो दिस इज द हायरार्की ऑफ टैक्स पेमेंट. दिस वन इज surcharge for individual HUF, AOP, BY. Correct. Now let's discuss surcharge for company. If you are domestic company, if you are a foreign company. Domestic company मतलब Indian company. ठीक है. एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी. इफ यू आर डोमेस्टिक कंपनी, आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम है. इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़, surcharge will be the 7%. But if your total income is greater than or equal to, that means equals to 10 crore, 10 crore more, surcharge is 12%. Next is surcharge for the foreign companies. If your total income, if you are a foreign company and total income आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है तो surcharge will be the 2%. If you are a foreign company और आपकी total income 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, surcharge will be the 5%. Comparatively, you can see that surcharge for Indian companies more than the foreign companies, क्योंकि फॉरेन कंपनीज को टैक्स रेट ज्यादा था और इंडियन कंपनीज का टैक्स रेट कम था, तो फॉरेन कंपनीज को सरचार्ज में गवर्नमेंट ने रिलीफ दी हुआ है कंपैरेटिवली टू द इंडियन कंपनीज. करेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट द सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी हम सरचार्ज देख लेते हैं, लग गया तो ठीक है. फिर फॉर्म्स और एलएलपी के ऊपर जहाँ पे हमने वो बॉक्स बनाया था वहां पे देख लेंगे. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ तक है, then surcharge will be 7%. और उनकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो the surcharge will be the 12%. So till now what we discussed, individual के सारे के tax rates under old scheme, new scheme which is 115 BSC,
for surcharge for the same, tax rate for Indian company, domestic company, surcharge for the same. फॉर्म्स के हमने सिर्फ टैक्स रेट देखे हैं, उसका सरचार्ज देखना बाकी है। फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने टैक्स रेट देख ली है और उसके साथ साथ हमने उनके सरचार्ज भी देख लिया, और रिबेट अंडर 87A इफ यू आर फॉलोइंग ओल्ड टैक्स रेजिम भी हमने देख लिया है। ये जो आपके स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपकी न्यू टैक्स रेजिम में इंक्लूड होता है। 115 BSC आप फॉलो करते हो तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। rebate under 87A, if you're following 115 BSC, then rebate is applicable if, यहाँ पे भी conditions है, total income is less than 7 lakhs and rebate will be basic tax or 25,000 whichever is lower. If you are following 115 BSC, आपकी total income 7 lakhs तक है, तो आपको rebate under 87A अलाउड होगी, बट वो क्या होगी 25,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर। हमने नॉर्मली क्या दिखा था 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। करेक्ट। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जस्ट हमें एक चीज देखनी है, सरचार्ज फॉर फॉर्म्स LLPs। ठीक है, ये रहा। Surcharge will be applicable only if total income is more than 1 crore। अगर कंपनी सॉरी फॉर्म और LLP की आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही सरचार्ज एप्लीकेबल एट द फ्लैट रेट ऑफ 20% ऑफ बेसिक टैक्स। सारे सरचार्जेस बेसिक टैक्स पे लगते हैं। सो दिस मच इज योर डिस्कशन अबाउट बेसिक टैक्स रेट्स, surcharge for individual HUF, AOP, BY, AJP, partnership firms, LLP, Indian company, domestic company, cooperative society. These are your basic discussions about tax rates and surcharge। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें सिर्फ देखना है तो मार्जिनल रिलीफ के आपको अलग से सम करवाऊंगा, वो अच्छे ट्रिक से हो जाएगा, स्टेप्स है, तो यू वोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। करेक्ट। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर रिवीजन, क्विक रिवीजन फॉर चैप्टर नंबर 1 of पेपर 3 अंडर न्यू स्कीम डायरेक्ट टैक्स लॉस। अभी जहां तक मुझे लग रहा है कुछ भी पेंडिंग नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, छोटी मोटी चीजें वो मैं आपको स्पेशली सम्स करवाऊंगा, तब हम देख लेंगे अलग से सम्स के रिवीजन पीरियड में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में से ही मार्क करवा देता हूँ, विच यू हैव टू प्रैक्टिस। करेक्ट, फ्रॉम मॉड्यूल यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, मॉड्यूल आपने कवर अप कर ली होगी, नहीं की तो ये क्वेश्चंस कर लो, इलस्ट्रेशन ये सिर्फ प्रैक्टिस है। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वी आर नॉट गेटिंग into the question matter of important marking, just we are giving you important question, not the important questions but your practice question। firstly you have to mark illustration number 3। illustration 3 क्या बोलता है दोस्तों आपका? illustration number 3 पेज नंबर 56 यहाँ पे बता रहा है। let me check what's the problem। यस, illustration 3 में आपको बोला गया है टोटल इनकम दी गई है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कौन सी है दोस्तों? 115 BSF की डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 3 आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर 115 BSC। करेक्ट, मार्क कर लो इसको आप। नेक्स्ट आपको देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 4 आपका जो दिया गया है, आपको ओल्ड टैक्स रिजिम से कैलकुलेट करना है। शिफ्ट आउट ऑफ सी, ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, ऑप्ट आउट फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब ओल्ड जो हमने देखी थी 3 एज ग्रुप्स के लिए, उसके लिए आपको करना है पीपल पर्सन हैविंग एज ऑफ 45 ईयर्स, 63 ईयर्स एंड 82 ईयर्स। तो ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। करेक्ट, ये दो क्वेश्चन हुए आपके टैक्स रिजिम्स पे। 115 BSC ओल्ड, ओल्ड में आपके दोनों सॉरी तीनों केसेस कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यू हैव टू डू इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है दोस्तों?
पेज नंबर 1.73. कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी एजेड 65 इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर. यहाँ पे आपको शायद से दोनों की दोनों केसेस कंपेयर करने को बोल सकते हैं. लेट्स सी क्या कहता है. टोटल इनकम 5,01,000 है. असेसमेंट ये 24-25. अज्यूम दैट इज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन एफडी. आपको ये लाइन इग्नोर करनी है. एज यू आर डूइंग इट, you have to keep in mind that we are revising it as a fresher. सेम एज बोथ द टैक्स रेजिम, दोनों टैक्स रेजिम आपको फॉलो करनी है. सिर्फ आपको 5,01,000 को, सॉरी 5,01,00,000 को आपको एज इनकम लेते हुए, डोंट थिंक अबाउट आपका ये मार्जिनल रिलीफ वाला पॉइंट. डन. आफ्टर इलस्ट्रेशन you have to practice question number 10 from page number 81. illustration number 8 क्या कह रहा है? सॉरी, illustration number 10. मिस्टर पवन, जिनके 35 ईयर्स हैं, रेजिडेंट इन इंडिया है, टोटल इनकम 7,15,000 है. सैलरी, इस लाइन को आप एक्सक्लूड करो अभी. ठीक है, मुझे पता है आप सबको आता है, बट रिवीजन करो, ऐसा समझ के करो कि कुछ भी नहीं आता. ये हमारा बेसिक चैप्टर है. डन. टैक्स लायबिलिटी उनकी कंप्यूट करनी है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम विच इज 115 BSC. अब आप बोलोगे इसमें क्या है, तो बच्चा इसमें आपको कैलकुलेट करना है रिबेट अंडर सेक्शन 87A. देखो सॉल्यूशन में भी वही दिया है. टैक्स लायबिलिटी दी हुई है आपको, ठीक है, बट मैं आपको कह दे रहा हूँ रिबेट आपको कंप्यूट करनी है. कैसे टैक्स लायबिलिटी दी है आपको? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम रिबेट अंडर 87A के बाद जो नेट पेबल टैक्स लायबिलिटी है उसको आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 10. नेक्स्ट illustration is illustration number 11, which is under that Mr. Piyush, aged 35 years, resident in India, total income 4,15,000, comprising salary. ये लाइन इग्नोर करो. compute tax liability of assessment year 24-25. We exercise the option of shift out of the default tax regime. default tax regime से opt out करें मतलब he is following old tax regime which has basic exemption limit of 2.5 lakh rupees. अब यहाँ पे आपको चेक करना है. क्या चेक करना है? आप समझदार हो. rebate will be allowed under section 87A or not. Correct? Okay, so this 5 illustration 3, 4, 8 and 10 and 11 आपको इतना प्रैक्टिस करना है फॉर दिस चैप्टर. इस चैप्टर से हमारा एक ही पोर्शन पेंडिंग है, दैट इज आवर ये अपना मार्जिनल रिलीफ वाला, विच वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक. और यू कैन से जब हम सम्स करेंगे तो मैं आपको वो अच्छे से करवा दूंगा अलग से. अभी आपको रेगुलर बेसिस पे बच्चा मिलेगा, सॉरी, टाइम टेबल और यू कैन से स्टडी प्लान डेली बेसिस पे विथ टाइम स्टैम्प्स विच यू हैव टू फॉलो. अगर आप ये फॉलो करते हो ना, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट. ठीक है. MCQs ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम. प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ ही में आपको मिल रहे होंगे टेस्ट पेपर्स. करेक्ट. So this much, if you do your 100% with honesty, you're going to pass the first अपना ये ग्रुप. ठीक है, हम चाहते हैं you have to pass both the groups. If you are appearing for both the groups, whatever is your attempt, May 24 first or second or fourth or no matters, but we have to make you pass with your exams for group whichever we are going to appear.
आपको सिर्फ ये फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ना है. विच वी आर प्रोवाइडिंग यू इज सफिशिएंट विथ ICI मॉड्यूल. करेक्ट. वी विल मीट यू सून विद द फर्दर लेक्चर्स एंड अपडेट्स. आपको ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह मिल जाएगी. टिल देन हैव अ गुड टाइम. जलसा करो. थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट यू सून. हैव अ गुड टाइम. ऑल द वेरी बेस्ट.